हमारे माननीय मंत्री हर्षवर्धन जी, हमारे राज्यसभा के मेरे साथी एवं देश के ज्येष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी जी, हमारी लोकसभा में हमारी साथी देश की जानी मानी अभिवक्ता और हमारी बहुत अच्छी तरह से पार्लियामेंट में स्पीच देने के लिए जो मशहूर है, जैसे मीनाक्षी लेखी जी, हमारे यहाँ पर मौजूद सभी मेंबर ट्रैफिक, आईआरसीटीसी के सभी वरिष्ठ अधिकारी, नई दिल्ली नगर निगम के माननीय उपाध्यक्ष करण सिंह तंवर जी, पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अग्रवाल जी, हमारे डीआरएम दिल्ली में सभी सम्मानित सदस्यगण, कोंकण रेलवे के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर गुप्ता जी और पूरे देश के सभी ऐसे लोग जो सही माने में देश की पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, विश्व में पर्यावरण की जो चिंताएं हैं उसको मिटाने के लिए जो काम करते हैं, और उसी बहाने आज शायद ये ट्रेन में उनमें से कुछ लोग सफर भी करेंगे, ऐसे सभी सम्मानीय भाई और बहनों, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि आज जो बात हमने बजट में कही थी उसके लिए, उसके ऊपर अमल करने के लिए आज ये टाइगर एक्सप्रेस और बहुत ही कुछ समय में अलग अलग टाइगर रिजर्व्स की तरफ रवाना होगी। वैसे आज और एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो एक दिन मनाना, एक हफ्ते के लिए किसी चीज के ऊपर फोकस करके काम करना, मैं मानता हूं पर्याप्त नहीं है। सही माने में पर्यावरण की रक्षा यदि करनी है तो पूरे साल भर ये काम होना चाहिए, और एक साल ही नहीं तो लगातार इस काम के ऊपर हमें काम करने की आवश्यकता है। और खास करके पर्यावरण को लेकर आज पूरे विश्व में जो चिंताएं हैं, इससे बहुत बड़ी मात्रा में सभी लोग प्रभावित हैं। और मुझे ये बात की और भी ज्यादा चिंता है कि यदि इस मामले में हम जितने जल्द काम करने की जरूरत है, इतनी जल्दी कदम नहीं उठाएंगे तो और आने वाले समय में शायद सिर्फ मानव जाति ही नहीं, लेकिन विश्व में जो आज पूरी मात्रा में बायोलॉजिकल लाइफ है वही खत्म होने का एक बहुत बड़ा खतरा है। हम सोचते हैं कि पर्यावरण से आम आदमी की क्या क्या लेन देन है, लेकिन यदि जब पर्यावरण के नष्ट होता है तो यदि सबसे बड़ा नुकसान यदि किसका होता होगा तो आम आदमी का होता है। यदि पर्यावरण की व्यवस्था सही माने में नहीं रहेगी तो हमें पीने के लिए जो शुद्ध पानी मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाएगा, और शुद्ध पानी नहीं मिलेगा तो उसका सबसे बड़ा शिकार यदि कोई होता है तो आम आदमी होता है। और जिसके पास किसी में जेब में पैसे है, ऐसा कोई भी आदमी कहीं पे जाके भी पानी खरीद सकता है, लेकिन आम आदमी को जो पानी मिलता है वो पानी पर्यावरण पर्याप्त मात्रा में अच्छी तरह, जिस तरह से प्रकृति ने बनाया था उस तरह से काम कर रहा है, इसीलिए पानी मिल सकता है। आपने अभी आईआरसीटीसी के पिक्चर में भी देखा होगा कि कहीं पे भी आपको पानी जहां से स्रोत है पानी का, वहां जब जाएंगे तो बहुत शुद्ध होता है। गंगोत्री में जाएंगे तो भी पानी शुद्ध मिलेगा, ब्रह्मपुत्र जहां से निकलते हैं कैलाश मानसरोवर वहां से भी आपको शुद्ध पानी मिलेगा, लेकिन उसका जो प्रदूषण होता है उसके बाद में होता है। और यदि ये पानी जंगलों से गुजरता है तो वहां पर कभी भी प्रदूषण की समस्या खड़ी नहीं हो सकती, और इसलिए आम आदमी को पीने के पानी देने की यदि प्रकृति ने कोई व्यवस्था की होगी तो व्यवस्था ठीक तरह से चल रही कि नहीं, ये देखने के लिए भी हमें इस तरह के अच्छे जंगल, फॉरेस्ट रहने की आवश्यकता है। दूसरी बात, आम आदमी सबसे और क्या चाहता है, शुद्ध हवा मिलनी चाहिए। शुद्ध हवा भी ये यदि हम जिस तरह से अलग अलग कदम उठाते हैं उसके कारण शुद्ध हवा भी बहुत बुरी तरह से उसके ऊपर प्रभाव हुआ है, जैसे कि दिल्ली में भी हुआ है। सबसे ज्यादा बीमारियां दिल्ली में जो लंग के डिसीजेज होते हैं उसकी जो दिखाई देते हैं, और हमारे डॉक्टर साहब वहां पर बैठे हैं, बहुत बड़े मशहूर डॉक्टर भी है तो हर्षवर्धन जी, वो आपको बताएंगे। वो यदि तक
सही माने में प्रकृति ने दिया हुआ हवा की जो देन है उसका यदि नष्ट करेंगे तो भी नहीं हो पाता। ये कहने का मतलब यह है कि पूरी मात्रा में आज पूरी विश्व की जो चिंताएं हैं पर्यावरण की, वो सबसे ज्यादा यदि किसी को प्रभावित करेगी वो आम आदमी को करेगी। इसलिए पर्यावरण का और आम आदमी की क्या लेन देन है, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। पर्यावरण की रक्षा ठीक करने के लिए जो अलग अलग कदम उठाने चाहिए, इसमें से एक सबसे बड़ा यदि कोई कदम होगा तो यह है कि ये हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन है, टाइगर्स की जो आबादी है, उसको सही मात्रा में सुरक्षित रखना चाहिए। जब तक टाइगर सुरक्षित है, उसका मतलब यह कि टाइगर इज एट द अपेक्स ऑफ द फूड चेन। इफ टाइगर इज इंटैक्ट, obviously the entire ecosystem is intact. If the entire ecosystem is not intact, that means the environment is damaged, and if the environment is damaged in any particular manner, the worst casualty will be the clean air, clean water, and therefore all people will suffer because of that. So having an assurance of whether there is a functioning ecosystem working as was designed by nature itself, then we must ensure that a tiger is protected. If the tiger disappears today, the human beings will disappear, if not tomorrow, certainly day after tomorrow. And therefore, globally, we are trying to create this program of tiger conservation. We had a very falling population of tigers. I must give credit to my colleague, the Minister of Environment and Forest, Mr. Prakash Javadekar, that for the first time we have noticed after several decades that tiger population in fact has risen. It has increased, and that's a good news. But it's not good enough. We need to even promote it more. There was a time when we had lakhs of tigers in India. Today they have become far and few thousand. They had fallen to probably less than 1,000, and that was a very precarious number, because then that would have led to extinction of the entire species. But luckily we have been able to reverse the trend. Now we must increase the number to probably 10,000, 20,000 if possible over a period of time, even to a larger number. But that means that for every one tiger, we need a protected forest area. Every tiger marks its territory. He needs something like 10 square kilometer area. He does not allow any other male tiger to come into that area. So that means if we want 1 lakh tigers, we would probably need 1 million square kilometers area of protected forest. It's a huge area. So having tiger means we have protected forest. Having protected forest means the environment is intact. And keeping environment intact is the best treasure that any country could have. And therefore, we are very happy that we decided that we will promote this idea through this tourism. Therefore, I announced in my budget speech, I remember my days as a Minister of Environment and Forest way back in 1998, when we were trying to protect tiger. So, I am, as a Minister of Railways, cannot just be oblivious of the responsibility that I had shouldered earlier to protect India's huge environment, the biggest treasure that we have, and therefore we decided to promote this idea. Whether tourism should be promoted or conservation should be the priority, that always is a conflict. I think we really need tourism, but sustainable tourism. We need tourism in a way that people going there will understand its importance, the link between conservation and the day-to-day life, the link between environment and the common man's interest. And to establish that link, going, seeing, believing is absolutely important, and therefore this tourism will also promote this idea. I am sure IRCTC will make sure that when these tourists go there, there will be enough educational programs in a very innovative way that people will understand this linkage in a much better manner. So we should try to promote it, we should try to protect it, we should try to ensure that we increase the environmental capital that we have got, the natural capital India endows, and we should try to go forward with this. So I am very happy that today, on a World Environment Day, we are fulfilling a budget promise. We are starting a new train, which is not just a train. Like I remember we have started recently a Science Express. We had launched a Climate Change Express. It has received huge support. Enthusiastically, people went and participated into this. I am sure we'll have a similar response to this. We'll definitely try to play our role. Railways must play a role of a good corporate citizen. We must not just be running a railways, we have to run the society. We have to take care of societal interests, and therefore doing this program is extremely important. I am very happy that all the good
capital of India. The three major tiger reserves will be visited, but there are many more. I think we are not going to Savai Madhopur, which is gateway to Ranthambore. We are not even going to some of the Dudhwa forest. There are many tiger reserves that we have in India, but I am sure this is the beginning. We'll launch more. I think we could also think about, I will request IRCTC to start another train which can take us to elephant reserves. If we don't have elephant reserve as such, like we have a tiger reserve, but we have a project tiger, also we have got project elephant to protect elephant. Maybe over a period of time, we'll promote these ideas which will bring in more revenues to railways, but also bring, more importantly, the satisfaction to railways of having done something good for the society, good for the environment, good for the country. So therefore we really look forward to this. I once again congratulate all my colleagues to have done this, Member Traffic and his colleagues, the IRCTC management, as well as I thank my two colleagues, members of parliament, as well as my colleague in the cabinet, Dr. Harshvardhan, for participating in this program. We look forward to doing something more like this as we go along. We have launched in railways quite a few environmental programs. We are doing water audits, we are doing water conservation, we are doing water recycling, we are making sure that all the water bodies in the railways, which they were earlier, we'll try to revitalize them. We want to use less water and try to do more. On energy front, again we have started energy audit. All the LED bulbs will be installed, replacing the old ones. Solar power will be put into place. We are also decided to use more wind energy wherever possible. Energy conservation will be a key theme. Also we have decided to plant 5 crore trees with participation of the state governments. We signed an agreement with Haryana and Punjab, and now with the Ministry of Environment and Forest as a partner, we like to reach out to all the states. So we want to do a number of things which will promote environment. This is only one step in that direction. Over a period of time, railway should be known as the best environment-friendly organization in the world. And to do that, we have to take number of measures. This is yet another measure that we have taken. So congratulations to all of you. Looking forward to more initiatives taken by the railways. Happy Environment Day to all the friends in different parts of the world. We have recently, incidentally, the Ranthambore is a gateway to the biggest, one of the biggest tiger reserve, and Savai Madhopur is a railway station. So the entire Savai Madhopur railway station has been painted with all the tigers and all the wildlife related pictures. This is one of the best pictorially designed stations that we have, and that again we did not spend 1 rupee of the railways. I just appealed to some of the conservationists. They came forward and they offered this help to them. So I also thank each one of them. Thank you very much. रेल मंत्री महोदय